Welcome to our very first Zoom session, which we're hoping to name Baignbaigum Baitak. And in this Baitak, we want to focus on applying to scholarships abroad, on all the different scholarships that are available for Pakistani students. So what we've tried to do is we made like this very, very short presentation to bring more structure to this. Our hope is this कि हमने वैसे 1 घंटे का slot इसके लिए रखा था कि हम इसमें बात करेंगे, that we speak for like 15-20 minutes, maybe 25 minutes, and then from after that we take your questions. हम सब कुछ cover नहीं कर सकते इस एक session में क्योंकि there is a lot to cover. What we'll try to do is we'll try to provide you information with what should you do before you start applying for scholarships. आपको scholarships कैसे ढूंढनी चाहिए, scholarship के बारे में research कैसे करनी चाहिए, अपने major कैसे select करना चाहिए, all of that stuff. So scholarships पे apply कैसे करते हैं वो इस session में नहीं होगा. We'll mostly be talking about steps that you should complete before start applying for scholarships. Yeah, and at the same time, like you will also get a list of scholarships जिसमें आप apply कर सकते हो, right? And what we want to show you is कि किस तरह जब आपको पता चल जाए किसी scholarship का, तो how can you look into it and see कि इसके लिए आप eligible हैं, नहीं हैं eligible, and what you need to do to understand कि क्या requirement है. Yeah. We will request everyone कि आप खुद को mute कर दें. We're also trying to like do it ourselves. Do it mute yourself ताकि उस तरीके से हम आसानी से जो है ना ये सेशन कर सकें. Confirm इस दौरान के if you can hear us properly and see us properly and if you can see the screen as well. तो फिर उसके बाद जो है we will start. कोई प्लीज कंफर्म कर सकता है कि आपको हमारी स्क्रीन में नजर आ रही है, हम भी नजर आ रहे हैं? जी नजर आ रहे हैं. नजर आ रहे हैं? Perfect. चलें. In that case, let's just dive. Yes, visual, audible. Great. Let's drive straight into the content of this Zoom session. पहले हम बात करेंगे. Most of you already know हम कौन हैं क्योंकि most of you have come from my Instagram account, but those of you who don't know, and then the ones who will be watching this later as a recording on other platforms, for them, we'll just quickly introduce ourselves. I'm Saha. I'm Fardad. We run a blog, Baignbaigum. We mostly post content on Instagram, but we try to post content on YouTube and other platforms as well. Yeah. We talk about different topics, one of which is scholarships. हम कोशिश करते हैं हम जितनी value provide कर सकें अपने content में, and scholarship is something that's very close to our hearts. Do you want to talk about it, why? Yeah, I think the main reason is that scholarships की वजह से I think we got that kind of a head start. कि अगर वो scholarship ना होती, especially through Fulbright, तो अगर वो ना होती तो we wouldn't have been like where we are right now. Yeah. Masters से पहले even in bachelors we had scholarships in lumps जिसकी वजह से हमें काफी advantage मिला कि we were able to study in a university otherwise जो हम afford ना कर. That was the scholarship was the only reason why we were able to afford lumps, and then later on that gave us enough foundation कि हम बाकी scholarships apply कर सकते हैं, like Fulbright, and we applied to many scholarships, and we feel that completely changed our life. That has really helped us create a life and sort of that we wanted, and that Fulbright experience really helped facilitate that, which is why we really encourage everybody to look for scholarships. अगर आपको किसी भी वजह से लगता है कि यार मेरे पास इतने resources नहीं हैं कि मैं मास्टर्स पे जा सकूं, बाहर पढ़ने कौन जाता है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, तो we are here to tell you this कि apart like सिर्फ जो standardized testing है, GRE हो गया, IELTS TOEFL हो गया, उसके खर्चे के अलावा और कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा. There are scholarships जिसके थ्रू आप फ्री में जा सकते हो, like you don't have to spend anything, and because we did it ourselves, तो हमें अब like यही reality लगती है. We want के जो लोग बात करते हैं, जो जाना चाह रहे होते हैं मास्टर्स अब्रॉड के लिए, स्टडी अब्रॉड के लिए, we tell them कि यार scholarships available हैं, apply to them and go और पाकिस्तान में master's through the scholarship. Something we tell everyone कि पाकिस्तान में इतनी scholarships available है जिसमें लोग अप्लाई नहीं करते, क्योंकि पता ही नहीं होता. इतनी scholarships available हैं कि आपको अपने पैसे दे के मास्टर्स और PhD करने की तो जरूरत ही नहीं है. There are just so many scholarships available. You just need to know how to find them, where to find them. Yeah. With that, we'll move to our next slide and talk about talk about some of the bigger scholarship programs in Pakistan. जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये वो programs हैं जिसपे हर साल पाकिस्तान से काफी लोग जाते हैं. हो सकता है इनमें से कुछ scholarships को आप पहचानते हो, जैसे Fulbright, Commonwealth, कुछ ऐसी scholarships होंगी जिनके बारे में आपने शायद इतना नहीं सुना हो. जिस तरह MEXT है, Chinese government scholarships है,
यहाँ पे कुछ मतलब these are some of the only ones जिसको जो है ना हमने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया हुआ है, hundreds of others. ये भी हमने इसलिए शेयर किया because we know कि इसमें जो है ना We are familiar with these, we yeah. are familiar with these and these are the bigger programs के इसमें 100-150 लोग हर साल जो हर है साल in जाते each program they go. हैं। एक फुलब्राइट में ही जो है वो हर साल तकरीबन 150 कैंडिडेट्स तो जाते ही हैं 150 मास्टर्स के जाते हैं, तकरीबन और फिर PhD के 50-60 भी। जो है PhD के जाते हैं. और अगर आप नंबर देखें कितने लोग अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन इन स्कॉलरशिप्स पे, सो यू विल सी कि टेक्निकली इतना कंपटीशन भी नहीं है, odds are really good for someone to get selected because Fatad and I, we have both been on selection committees and review committees, so we know कि बाहर से लगता है कि पता नहीं कितने लोग अप्लाई करते होंगे, और HEC के स्कॉलरशिप पे लोग अप्लाई भी करते हैं स्पेशली PhD और उन प्रोग्राम्स के लिए, but generally इन स्कॉलरशिप पे इतना कंपटीशन नहीं है. You do have to have merit obviously because they will evaluate you based on your credentials and qualifications and compared to other applicants as well, right? So but they want के profiles आए, but the hardly 3,000 बंदा 4,000 लोग Exactly. इस तरह लोग अप्लाई करते हैं, which is not a big number if you think about it. like this is an interesting fact. Last year Fulbright पे पाकिस्तान में सिर्फ 1100 लोगों ने अप्लाई किया था और उसमें से 250 लोग सेलेक्ट हुए. These are like अगर 20 से 25% सिलेक्शन के चांसेस बन गए, those are very good odds. Yeah. So these are some of the scholarships जिनके बहुत बड़ी प्रोग्राम हैं. आप हमने इंस्टाग्राम पे इस पे रील्स ही बनाई हुई हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप में तो we'd highly recommend that you Google these and find out के start with this. Yeah. And just to like make sure you have a record of this, हम इसको like बाद में recording को upload भी करेंगे, but take a screenshot तो आपके पास ये सारे आ जाएंगे. Fulbright है, Turkey का है, Erasmus Mundus, DARD है for Germany, Commonwealth is for UK. So like you'll find that. And for anyone who's starting to look into scholarships, this would be a good starting point. अगर मैं दोबारा से स्कॉलरशिप अप्लाई कर रही होती तो मैं स्टार्ट करती इन स्कॉलरशिप से, फुलब्राइट से, कॉमनवेल्थ से, शिवनिंग से, इन स्कॉलरशिप से स्टार्ट करती. इसकी वजह यह है कि इसका alumni बेस बहुत बड़ा है. It's very easy to find people who've already been on these scholarships, so it's very easy to find guidance as compared to the ones जिनके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है. आपको सर्बिया में कोई स्कॉलरशिप है जो कि बहुत हैं, you'll be surprised. सर्बिया में, इटली में बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, बट उनके alumni मिलना, ऐसे लोग मिलना मुश्किल होते हैं जो गए हुए हैं इस पे. And that can make all the difference to your application. You will find alumni on YouTube, LinkedIn, Instagram जो इन scholarships के बारे में content बना रहे हैं. Like Fulbright पे तो हमने खुद बनाए, right? हमारे YouTube के channel पे you will find the entire application process, personal statement, study research objective कैसे लिखना है. इसी तरह for all the other programs you'll find their alumni who are making content on this. So you will find that resource on how to apply for this. And generally people are very happy to help for free help for free about these colleges पे खुद गए हुए होते हैं, because अक्सर लोगों के लिए scholarship exchange program पे जाना इतना एक life changing experience होता है that they do want to share their experience. So I personally know a lot of people who talk about Shivning and Commonwealth on LinkedIn. So you can easily reach out to them. But the point being, this is the point. These are the scholarships with which you should start. If we were to do it again, we'll make an Excel sheet जिसके अंदर हमें 10-12 स्कॉलरशिप डालते और इनके बारे में रिसर्च करते, ढूंढते कि कौन गया है, कैसे जाया जा सकता है. But these are just the main ones. There are a lot many more scholarships. जिनके बारे में फदाता बताएंगे. So like I'm sorry to bother you. क्या हम लोग questions पूछ सकते हैं? Let's do like questions at the end. Like we will session के आखिर में ना हम questions के लिए पूरा time छोड़ेंगे and we will answer all your questions. That's amazing. Thank you so much. Let's just go through all of this before that, ताकि फिर like every one of you has an idea of like what's the main like basic process of it, कैसे approach करना है इसको, and then at the end if you have any confusion, if you want any clarity, we'll do that. All right, so what I want to do right now is show you another resource जो कि Can you first switch to the next slide? Move to the next slide and then right now it's here. तो हाँ, what I want to do is like show you a resource जहाँ पे आपको पाकिस्तान से मतलब जितने लोग scholarships पे गए हैं, like a majority of them, what they do is कि वो उस resource पे आके share कर रहे हैं कि how to apply, what are the best practices, कैसे करना है, कहाँ पे scholarships available हैं. तो that will like in addition to all the scholarships that we shared, वहाँ पे कुछ ऐसे scholarships जिनका शायद आपको commonly पता ना हो. University specific scholarship हो सकती है PhD के लिए, masters के लिए. तो you will find this like excellent resource जिसको use करके you will be able to apply for scholarships. Let me show this to you.
This is a Facebook group जिसके बारे में हमने Instagram पे Sorry, slides are not visible. मैं आपको Sorry to interrupt. मैं आपको दिखा रहा हूँ. This is a Facebook group जो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, which is like हम repeatedly इसके बारे में बात करते हैं and we recommend, like highly recommend कि जितने भी लोग स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन करें और उस पे जो है ना अच्छा खासा टाइम गुजारें, अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और आप जो है कैसे उनके लिए अप्लाई कर सकते हो. आई थिंक Can you see our screen now? You should be able to see. You should be able to see Scholarship Network Group. Yeah, you should be able to see this. Yeah, screen is visible. Screen is visible. Perfect. Yeah. Slides. So you'll be able to see this Scholarship Network के नाम से ये ग्रुप है. There were some people जिसमें वकार बेग भी शामिल हैं जिन्होंने एक ग्रुप बनाया था. He and some of his friends and colleagues, they made this group for Pakistani students. This is like approaching 1 million right now, and this is an excellent resource for scholarship. मतलब you go here and you'll find about scholarship जिनका जो है ना शायद आपने पहले नाम भी ना सुना हो, but they are like fully funded scholarship जिसके through already Pakistani students वहाँ पे गए हुए हैं. They have an alumni base, वो वहाँ पे आपको help करने के लिए ready है, community भी है. So this is what I love about this. What you can do is like go to this scholarship and search करें. For example, मैं यहाँ पे जो है search करता हूँ, मैं Erasmus Mundus लिखता हूँ, right? And you'll find posts on it जिसमें लोगों ने बताया हुआ है, like they have given their tips and tricks, उन्होंने files upload की हुई हैं, like how to write an email to your supervisor, how to write a statement. So like proper templates हैं इस पे, which is amazing. It's a great resource. इस पे आप टाइम गुजारेंगे, आपको like बहुत easily एक ही घंटे के अंदर आपको जो है ना पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि अच्छा these are the scholarships that are open right now, I can apply to. इस ग्रुप की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको ऐसी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी जिसके बारे में आपको और कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, बिकॉज बहुत कम मेन जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में फिर भी थोड़े बहुत ब्लॉग्स मिल जाएंगे, कुछ alumni गाइडेंस मिल जाएगी, बट इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम कल परसों में देख रहे थे somebody who had gone to Serbia for some scholarship, for a fully funded scholarship to do his PhD, I think. इन स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप गूगल भी करें ना कि स्कॉलरशिप इन सर्बिया फुली फंडेड, तभी भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है. सो दिस ग्रुप दैट वे इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू गो, बिकॉज यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ है. और like just look at this file section of the group, right? आज अपलोड हुआ है, वैसे कल अपलोड हुआ है, like December 15. Look at this, it has an amazing like repository of all the important things, list of open scholarships, PhD in Italy, HSC का जो HAT test है उसके preparation, like all the things that are related to scholarships. लोगों ने templates upload किए हैं, personal statements के, research statements के. So this is an excellent place to start, and for all those people who want के वो जो है ना अगले साल किसी fully funded scholarship पे जाएं, तो I think they should spend like at least 2-3 hours on this group. More. यहाँ पे इतने resources हैं, आपको ज़्यादा ही time लग जाएगा. इधर से अपनी वो strategy मतलब start करें इधर, and then like just start applying to scholarships. Now there are two sorts of people that we meet when we talk to people about scholarships. That there's one category that say कि हमें Fulbright पे ही जाना है, हम 4 दफा apply करेंगे, 4 साल इंतजार कर लेंगे, लेकिन जाना Fulbright पे ही है. Then for that's a very different strategy. For whatever reason, if you want to go to go for a very very specific scholarship, that's a whole different strategy. That means कि आपको फिर जितने ज़्यादा उस scholarship के alumni base है, जितने ज़्यादा लोग scholarship पे गए हुए हैं उनसे बात करें. If you're open to going for masters just about anywhere, so long it's fully funded, कि इन countries में से कहीं भी अगर मैं चली जाऊँ on fully funded scholarship, then we would highly recommend that you go to this Facebook group. इसके ऊपर इसको साइड में बस खोल के रखें और देखते रहें इसके resources. Make sure that you go through the available resources, and then another big plus of joining this group is कि यहाँ पे पाकिस्तानी जितने भी स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं. सो अगर आपका कोई भी सवाल हो जो बहुत स्पेसिफिक है कि आपको अपनी डिग्री किस तरह टेस्ट करा के कौन सी एम्बेसी में कहाँ भेजनी है, यू आस्क दैट क्वेश्चन, किसी ना किसी को उसका जवाब पता ही होगा. एंड दैट्स अ ट्रबल विद इंटरनेशनल ग्रुप्स कि वहाँ पे क्योंकि इतने डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग होते हैं तो आपको बहुत स्पेसिफिक जवाब नहीं मिल पाता. बट यहाँ पे बहुत लोग हैं जिनके बहुत जिनके एक्सपीरियंसेस जिन्होंने खुद ट्राई किया हुआ है कैसे करना है. So you'll be able to find guidance which is very relevant to your case. Yes, and like the great thing is that they conduct regular live sessions जिसमें
वो scholarship students जो already वहाँ पे हैं, they are like in the live session and then they're giving you like the details कि हमें जो है इन डिटेल फुल ब्राइट का बहुत अच्छा पता है, राइट, कि हम फुल ब्राइट के बारे में इसलिए बात करते हैं ज्यादा रेगुलरली. सो लाइक इमेजिन कि जिस भी स्कॉलरशिप पे आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, वहां पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट है, दैट पर्सन इज गिविंग यू ऑल द लाइक ins and outs of how to apply, कौन सी चीजें हैं which work which don't work. So like that is an amazing place for you, and like इस तरह की अच्छी गाइडेंस और रिसोर्स कहीं और आपको नहीं मिलेगी. सो हाईली रिकमेंडेड दैट यू जॉइन द स्कॉलरशिप नेटवर्क. So one thing would be to do your research on the bigger Fulbright bigger fully funded programs like Fulbright and Chevening and all of that. Yeah. And the next would be to join this group. So this would be a good starting point for all those who are looking to apply for fully funded scholarships. Yeah. But before that. Yeah, and then like we talk about this हमेशा. जब भी स्टूडेंट हमारे इंस्टाग्राम पे बात होती है और जब भी कोई रीच आउट करता है कि like इस यार continuously try करो please. This is very informative. Thank you so much. Thank This is very informative, but we'll highly recommend that everyone that you mute yourself. ठीक है. So and like we were telling you कि बहुत सारे students when they reach out, they kind of like are at a blank slate and then they reach out कि हमें scholarship पे apply करना है. What we like जब भी इस तरह का केस होता है तो हम यही कहते हैं उनको कि there's some preliminary research that you need to do before you like start applying for a scholarship. Yeah. The most important thing there is to select and identify and select the program that you want to apply. Like I'm not talking about the scholarship program, the actually graduate degree program जिसमें आप interested हो, which you want to do your masters or a PhD in. बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, ये पूछते हैं कि अगर मैं पब्लिक पॉलिसी में अप्लाई करूं तो मिल जाएगी स्कॉलरशिप, या मैं एजुकेशन में अप्लाई करूं तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी ना. What they're trying to do is they're trying to look for a program, a degree जिसके through scholarship मिल जाए, and that is not an advisable approach. That is not how you should do it. क्योंकि graduate program, masters या PhD, it's a big commitment. आप साल का प्रोग्राम करें, 2 साल का प्रोग्राम करें या 5 साल की डिग्री करें, when you are going for a graduate program, you're committing to staying in that field, और आपके जो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी या जो भी आपके करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगी आपकी प्रोग्राम ऑफ योर चॉइस. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डिसाइड करें कि आपको पढ़ना क्या है, करना क्या है, और उसके बाद उससे रेलेवेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ढूंढें. आई अंडरस्टैंड द अट्रैक्शन इन दिस कि जो भी कोई ऐसी डिग्री उठा लें जिसके अंदर हमें सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हों, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप्स के होते हैं प्रेफरेंस. जैसे फुल ब्राइट प्रेफर करता है अगर कोई एजुकेशन में डिग्री करे या कोई एनर्जी में डिग्री करे. आई थिंक एनर्जी इज आल्सो हेल्थ में, एजुकेशन में, and they also have like a broad category. या बोलेंगे humanities या फिर बोलेंगे natural sciences, but like उस तरह. But that is not the approach to go कि आप पहले स्कॉलरशिप देखेंगे, मुझे अमेरिका जाना है तो मैं फुल ब्राइट सिलेक्ट करती हूँ, फिर देखते हैं फुल ब्राइट में कौन सी उसकी प्रेफरेंस है, so I'll pick that degree. Because even if you manage to nail that, it'll be very hard for you to create your application pack in such a way कि आपकी selection हो सके. A better way to do this is पहले decide करें आपको पढ़ना क्या है. और उसका भी obviously criteria will discuss that with you कि कैसे decide करना होता है, आपने पढ़ना क्या है, आपने program कौन सा करना है, and then you decide कि कौन सी scholarship में मैंने apply करना है. And having said that, we are on the slide on selecting your program of study. And like people who are applying for their masters or PhD will kind of have an idea, थोड़ा सा general idea होगा कि कहाँ पे apply करना है. And even if you don't have that idea, कोई मसला नहीं है, like you can figure that out. Like I did my masters in a kind of a different field than what I did my bachelor's in. But the good place to start would be कि अगर आपको एक general field का idea है, you just like start looking at the programs that are available. Google करें master's programs on, for example, public health policy and management, and then I just go to like each and every university which has that program, और मैं जो है वो डिटेल में देखूं कि उसमें क्या प्रोग्राम की डिटेल्स क्या हैं, what are the courses that are there, क्या उसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा है नहीं बन रहा. But to take a step back, if you have no idea in terms of what you want to do, कि मुझे अगला प्रोग्राम क्या करना है, डिग्री क्या डिसाइड करनी है, जनरल फील्ड का तो आपका आइडिया होगा because it will depend on your undergrad or your work experience. So these are some of the questions that we encourage people to ask themselves कि जो भी आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, is that relevant to your undergrad degree or not? For example, मेरा अंडरग्रेड इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में था, पर मेरा मास्टर्स बिल्कुल डिफरेंट चीज़ में था. मेरा मास्टर्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी में.
So this question is especially important अगर आपका work experience नहीं है. For me to switch from economics to education technology, I had 3 years of work experience to back it up, to write in my application pack कि मुझे education technology में इसकी masters करना है क्योंकि मेरा work experience है और I know what I'm talking about और मुझे पता है कि market में gap कहाँ है जहाँ पे मैं अगर मेरी expertise से मैं वहाँ contribute कर सकती हूँ. So I had 3 years of work experience to back that up. Now, if you don't have that kind of work experience, then you need to identify a degree program जो थोड़ा बहुत relevant हो आपके undergrad से, if not entirely. Ideally, अगर आप economics में undergrad हो और आप economics में masters करना चाह रहे हैं, then it's an easy case. Yeah. If you have an undergrad in economics and you want to do something slightly different, like public health or public policy, then you need to be able to give some good justification कि आपने कोई research की है या आपका work experience है, कोई project है, volunteer experience है. Exactly. Yeah. And those are also like not as like volunteer experience उतना strong case नहीं बनाता जितना work experience बनाता है. But the point is whatever program you decide, it has to either be backed by your work experience or your undergrad degree. अगर कोई education में कोई degree करना चाह रहा है जैसे कि मैंने अपने 3rd year में volunteer किया था, पढ़ाया था एक school में. That does add to the application, that does add to support your application, but that does not sort of make a very strong case for it. Yeah, for you it is important to understand के gaps क्या हैं, like और वो gaps meet कैसे करने हैं, right? For example, if work experience is the gap, then you look for opportunities in that relevant field. Or volunteer opportunities अगर आप undergrad में हैं so, and if you're not finding a job there, to volunteer opportunities to like support that application pack. And at the same time, अगर for example आपका background जो है degree bachelor's की degree is in a different field, but masters का जो है वो connect नहीं हो रहा, तो we'll highly recommend कि आप लोग जो है ना Coursera पे जाके कोई relevant certification कर लें connected to that field that you want to apply. Those things support. They support the application package. But they still do not make a very, very strong case in terms of ऐसा नहीं आप बोलें कि मुझे I don't know, बिल्कुल different कोई degree करनी है क्योंकि मैंने 10 Coursera courses. You would have to like make a case for it and like support your statements. So a couple of things to think about before, like when you decide select your program of study is one, is it relevant to your undergrad? अगर undergrad से relevant नहीं है, do you have work experience to support your interest in that field? And then another important thing is to see if you meet the eligibility criteria. For example, कुछ programs होते हैं जिसके अंदर आपको कुछ आपका रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल पब्लिक पॉलिसी की जो डिग्रीज होती हैं उसके अंदर मिनिमम 2 साल, अक्सर यूनिवर्सिटीज में मिनिमम 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. स्पेशली यूएस यूनिवर्सिटीज रिक्वायर यू टू हैव 2 years of work experience before you can even apply for that program. Now it's important कि आप जो भी अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं आप जाके उसकी टॉप यूनिवर्सिटीज उठाएं और उसमें जाके उस प्रोग्राम को देखेंगे. पब्लिक पॉलिसी इन येल, पब्लिक पॉलिसी एट हार्वर्ड और व्हाटएवर लाइक बिगर प्रोग्राम्स, एंड गो सी देयर रिक्वायरमेंट्स कि उनकी कोई जीपीए कट ऑफ तो नहीं है, उनका कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कोई उनका स्पेसिफिक टेस्टिंग का रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि एक तो होता है ना स्टैंडर्डाइज्ड जीआरई देना है आपने या आईएलटीएस देना है. कुछ यूनिवर्सिटी समटाइम्स दे रिक्वायर यू टू टेक सम वेरी स्पेसिफिक टेस्ट. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट बिफोर यू मूव ऑन टू लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप्स यू शुड सी कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके एलिजिबिलिटी आप मीट करते हैं. ये ना हो कि आप स्कॉलरशिप्स का पे अप्लाई करना शुरू कर दें या फिर आप उस प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएं, देन यू रियलाइज कि आप तो पब्लिक पॉलिसी करना चाह रहे हैं जिसके लिए आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है. सो once you identify the graduate degree or the PhD degree that you are interested in applying, फिर जो है now then go to the scholarship वाला step, right? Go make a list of all the scholarships that are available and then spend some time on each individual scholarship and see if you meet their eligibility requirements or not. और जिसके eligibility meet हो रही है then just filter those, keep them in your list. जिनकी नहीं हो रही है आप उनको हटा दें. Like that way you will be able to focus your efforts and actually like start applying for the scholarships. And we said eligibility के बाद like then just the next step would be to understand what are the requirements for that specific scholarship. कि GRE चाहिए नहीं चाहिए, IELTS TOEFL चाहिए नहीं चाहिए, letters of recommendations, statements वगैरह, and to understand कि what would you need to do to be able to apply for those scholarships, that scholarship. So again, if I had to do it all over again, and this was something we in fact did it back in 2016. हमने एक Excel sheet बनाई थी जिसके अंदर हमने सारी वो scholarships list down की थी जो हमें अच्छी लग रही थी, but कोई like अच्छी in a sense की अच्छी
which were open, available, और हमें समझ आ रहा था we can apply to that. Eligibility criteria meet कर रहे थे हम, और जो किसी ऐसे country में थी जहाँ भी thought कि यहाँ तो पढ़ने में मजा आएगा. So I applied to a scholarship in Italy as well, because I thought it'll be a lot of fun if I end up going to Italy and spend 2 years there. So we made a list of scholarships. पहले उसमें वो scholarships नहीं जो कि बड़े programs हैं, Fulbright, Commonwealth, DART, ये वाले programs थे. उसके बाद कुछ 5-6 मैंने वो उठाई थी जो थोड़े lesser known programs हैं, but जहाँ मेरे chances ज़्यादा होंगे. जैसे we applied to that Chinese scholarship. Fardad applied to one scholarship in Hungary. Stipendium Hungaricum. You applied to. Yeah, and like the point is to increase your chances of selection, right? और वो कैसे बढ़ते हैं जब आप जितने ज़्यादा scholarships पे आप apply करेंगे उतने ही आपके chances बढ़ जाएंगे for selection for fully funded scholarship. So like put yourself in that advantageous position जहाँ पे आपको जो है ना मिले scholarship. And once you have that Excel sheet, आपने figure out कर लिया कि अच्छा ये 20 scholarships हैं जहाँ मैं apply करना चाहता हूँ. उसके बाद you start filtering that list out by seeing कि आप हर एक scholarship को उठाएं, उसको Google करें और उसकी website, scholarship की अपनी website पे जाएं. Don't go look for blogs and other things. जब आप initial research करें जैसे Fulbright है या Commonwealth है, go to their main website and then start your research. One of the few things that you should always look before you start applying or thinking about applying to a scholarship is eligibility criteria. कि आप eligibility criteria meet कर रहे हैं कि नहीं. Their document requirements. जैसे for example Fulbright के लिए GRE चाहिए होता है, but Erasmus funders के लिए आपको IELTS academic देना होता है. Because उससे आपको थोड़ा ज़हन में आएगा कि आपका कितना खर्चा लग जाएगा सब पे. जब हमने अप्लाई किया था तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे. हम लोग we had just like started. We started applying in 2015, right? काम करते हुए 1 साल हुआ था तो इतने like we had to be careful कि हम GRE पे कितने पैसे दे रहे हैं और IELTS पे कितने पैसे दे रहे हैं. But that also does come into consideration. कि आपको कितने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है और कितना उस पर खर्चा आएगा. Then another thing you should look into is just general timeline कि कितना टाइम लग जाता है. कुछ scholarships का लंबा टाइम फ्रेम होता है. जैसे Fulbright में तकरीबन साल से ऊपर 1.5 साल लग जाता है आपको जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और उस पॉइंट से लेके जब तक जब आप एक्चुअली जाते हैं प्रोग्राम पे. आई थिंक सारे जो बड़े प्रोग्राम्स हैं ना उसमें इसी तरह का टाइम लाइन है कि एडमिशन साइकिल से तकरीबन 1 साइकिल पहले जो है ना वो प्रोसेस शुरू हो जाता है. सो लाइक आई थिंक द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप जितनी भी आपने स्कॉलरशिप की लिस्ट बनाई है उसके फिर आप टाइमलाइंस जो है ना वो नोट कर लें कि व्हेन डू दे ओपन और उनकी डेडलाइंस कब है. क्योंकि दैट वे एंड इफ यू पुट दैट ऑन योर कैलेंडर you will have a clear idea. आपको नजर आ रहा होगा कि अच्छा डेडलाइन कब है, what I need to do. Fadad loves calendars. Loves putting things on calendars. So like highly recommended. क्योंकि वरना अगर आप कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे and if you don't put it a deadline on it, तो you would not be able to like stick to it and apply to it. You will इतने ज़्यादा scholarships available हैं कि you will forget कि कौन सा open है और कहाँ पे मतलब deadline क्या है and what you need to do at that specific point. Yeah. Another important thing to look at that point would be कि आपकी जो आपने degree select की है क्या वो उस scholarship की preferred field में fall करेगा नहीं. For example जब मैंने education I wanted to do a degree in education and Fulbright also has that in their what degree of preference preferred study program preferred field of study or something, right? कि Fulbright preference देता है, extra points देता है उन लोगों को जो कुछ fields में होते हैं. And they have already provided that list. वो उनकी already उनकी website पे available है कि अगर आप energy में apply कर रहे हैं, education में apply कर रहे हैं, public health में apply कर रहे हैं, इस तरह की कुछ 6-7 fields हैं इनके उन्होंने नाम दिए हुए हैं. So that also kind of gives you an idea कि अच्छा अगर मेरे chances ज़्यादा होंगे compared to someone who's applying in a field that's not in the list of preferred field of study. So that's also something important because Erasmus की भी I think एक list होती है. List नहीं उनकी तो हर साल नए programs आते हैं. So that would be also something जो कि आप अपने जब आप filter कर रहे होंगे अपनी list को उसी time पे देखें कि क्या कौन सी scholarships जो हैं वो मेरी area of study को prefer कर रही हैं. For example, BDS और medical के students के लिए बहुत कम होती हैं scholarships. तो बहुत कम specific scholarships हैं. Especially for like MBBS and BDS degrees, for example. Like the ones we know एक दो ही हैं और उसमें भी एक seat available होती है, right? And तो like but people who have completed their BDS degrees, MBBS degrees, अगर वो masters किसी field में करना चाह रहे हैं, बहुत सारे public health में चले जाते हैं, तो like you can apply. Then you have a good profile for it. So these are some of the points we had with regards to what you should do before starting your scholarship application. This is that preliminary research that you should be doing. पहले आप अपनी scholarship ढूंढें, main programs,
फिर स्कॉलरशिप नेटवर्क ज्वाइन करें, वहाँ से देखें कि कौन कौन सी और प्रोग्राम्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें प्रॉपर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, ये सोच के नहीं किस पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ये सोच के क्या आप पढ़ना चाह रहे हैं और आप कहाँ से वो पढ़ना चाह रहे हैं, एंड देन फ्रॉम देयर you start researching your applications. You look at their criteria, you look at their tests, you look at their timelines, आपके पास cost क्या आएगी, कितना वक्त लग जाएगा आपको, and that is once you've done all of that, that's when you're ready to start applying to scholarships. By the end of this process आपके पास एक list होगी 10-12 scholarships की, और अगर आप 10-12 scholarships apply कर रहे हैं तो there's a very good chance कि आपका कहीं ना कहीं से तो response आ जाएगा. So yeah, and do you add something to it? no, I think that covers most of what we wanted to talk about in the session, and abhi let's open the floor yes for questions, and काफी सारे लोगों ने यहाँ भी questions पूछे हैं chat में, that's what I'm saying कि आप chat में अपने questions लिखें and we'll go through. काफी सारे लोगों ने already लिखे हैं, so we'll answer this as well. In the meantime, if you want to take someone on call, like किसी से बात करके question लेना है तो अच्छा हाँ, so questions, let's do that as well. What I will do is कि जिनके raised hands हैं I will let them unmute, right? Someone has asked, what do you think about people who need to come back after completing the degree? What if they get a job? You have to come back after completing your degree if you're signing a bond. कुछ scholarship में आपको bond sign करना होता है, जैसे Fulbright आपसे प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले एक डॉक्यूमेंट साइन कराता है कि अगर आपने 2 साल बाद आप वापस नहीं आए तो आपको सारे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे विद इंटरेस्ट. बहुत सारा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मुझे नंबर नहीं पता. एंड even if somehow you manage to find a big job that allows you to pay back that money, you get blacklisted. In a sense, blacklisted in a sense कि it's not considered good कि आपके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, आपको पैसे दिए गए हैं और इस वादे के साथ कि आप वापस आएंगे, and now you want to stay back. And that has happened. I know people who want to stay back, and if they've tried to look for ways to do it, but it's a very strong bond. So for scholarships that you sign a bond, you have to come back. That's the easiest way to get through the process. And if you're like bent on going and settling abroad, तो उसके लिए like we would say then apply to those scholarships जहाँ पे requirement नहीं है वापस आने की. Erasmus के वापस नहीं आना होता. And then like university specific जो scholarships होते हैं, for example Canada में McGill University में McCall McBain scholarship है, और I think हर साल जो है 20 fully funded इस तरह के scholarships होते हैं वहाँ पे for masters, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वापस आने के. सो देन लाइक जब वही हम कहते हैं जहाँ पे आप फिल्टर कर रहे हो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के, वहाँ पे पुट दिस रिक्वायरमेंट लाइक कि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसमें वापस आना है, आई विल नॉट अप्लाई टू देम एंड देन जस्ट अप्लाई अकॉर्डिंगली. I'm requesting people to unmute themselves, especially those जिन्होंने hand raise किए हुए. Is there some way you can unmute them? Ask to unmute, you can press this and like. Yeah, so अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपने आपको अनम्यूट करके यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन. जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, फैजान अहमद. Yes, am I audible? Yes, you are, Faizan. Yes, may I ask a question? Yeah, sure. Yeah. My question is कि अगर like for instance कि आपने मतलब shortlist कर लिया ना universities को, उसके बाद कि आप look forward कर रहे हैं कि आप personal statement बनाएं या letter of recommendation या मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट और रेफरेंस लेटर है, अब उसका ड्राफ्ट हर किसी स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफिकली अलग से कैसे तैयार करें. लाइक वी हैव टू अप्लाई फॉर मतलब लाइक 100 ऑफ स्कॉलरशिप्स, तो सबके लिए रेफरेंस लेटर अलग से प्रोफेसर से रिक्वायर किया जाए. इसका मतलब काइंडली गाइड कीजिए इस चीज के बारे में, पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में. थैंक यू सो मच. Yes, about personal letters? personal statements and recommendation letters. Recommendations. Okay. And yes, it happens जब आप apply करते हो scholarships. That's why like whichever scholarship program you decide to apply to, like final करके उसमें फिर पूरी effort देनी है, because you have to ask your referees for letters of recommendations, and it is necessary. Something that I like always advise जो students हैं जो universities में हैं, that I tell them कि यार प्रोफेसर्स और इनके साथ जो है अच्छा रिलेशन रखें. लाइक गो एंड स्पीक टू देम, हैव दैट रिलेशनशिप जहाँ पे आप उनको मल्टीपल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए मल्टीपल मतलब आप रिकमेंडेशंस के लिए रिक्वेस्ट कर सको. एंड देयर इज आल्सो लाइक एन एटिकेट अबाउट इट एज वेल. फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्कॉलरशिप की डेडलाइन फॉर एग्जांपल 3 दिन बाद है और आप अभी रीच आउट कर लेते हो रेफरी को कि मुझे रिकमेंडेशन चाहिए, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क. एटलीस्ट आपको 3-4 हफ्ते का गैप देना चाहिए. एंड व्हाट वी डिड जब हम बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे थे अपने
वर्क प्लेसेस पे जो हमारे रेफरेंस थे उनके साथ, उनको जब हमने बताया कि वी आर अप्लाइंग एंड वी आर इंटरेस्टेड एंड वी वांट यू टू राइट रेफरेंस लेटर फॉर अस, हम उनको ड्राफ्ट बना के दे देते थे कि यार ये ड्राफ्ट है, इस पे आप थोड़ा ऐड कर लें, एंड दैट्स हाउ यू कैन लाइक मेक देयर जॉब इजियर टू राइट अ रेफरेंस फॉर यू. तो ये जरूर जहन में रखिएगा. Don't wait for them to ask you for a draft. It's a very common thing that's just generally accepted. आप जब रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे एक रेफरेंस लेटर चाहिए, आप हमेशा मेंशन करें आपने कोर्स क्या लिया उनसे, क्योंकि आगे प्रोफेसर को मोस्ट लाइकली याद नहीं होगा unless you're really good friends with your professor. आप मेंशन करें मैंने ये कोर्स लिया था, इस सेमेस्टर में लिया था, मेरा ये ग्रेड आया था, this is what I worked on, and I am hoping if you could write me a reference letter for this scholarship for this program. And make their job easier. Make their job. And if it's okay, like I'm sharing a draft or I can share a draft if that works for you, make it easy for them कि उन्हें सिर्फ अपना stamp लगाना हो, नाम लगाना हो, and then just like if they want they can add a few lines. Or remove a few lines. A few lines. क्योंकि अक्सर professors बहुत like ऐसा नहीं है कि वो पूरा letter लिखेंगे. अगर आपने उनसे बोला कि मुझे letter लिख के दे दें तो आपको वो letter नहीं मिलेगा ही नहीं वो letter आपको. और ऐसा भी होता है कि सेम यूनिवर्सिटी से जब प्रोफेसर्स लिखते हैं, ये तो मैंने खुद देखा है एप्लीकेशन रिव्यू करते हुए, वो सेम रेफरेंस लेटर चल रहा होता है, which is not okay. लेकिन सेम रेफरेंस लेटर सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं वो. Hence the point to like have a good draft लिखें and have a good relationship with professors so that they can write a good recommendation letter. Somebody here has asked, what about finances required for fully funded scholarships? Other than the cost incurred in taking the tests, for example, GRE, there is no other, you do not require finances separately. आपको कोई पैसे नहीं रखवाने होते, कोई बॉन्ड नहीं करना होता. PhD के लिए जो HEC से connected scholarships गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाले जो scholarships हैं उसमें जो है they might require you to like sign a bond और कुछ जो है ना प्रॉपर्टी वगैरह कुछ इस तरह करवाना. हाँ, वो गारंटी चाहते हैं कि आप वापस आएंगे. वो भी कुछ प्रोग्राम्स में. बट इसके अलावा मास्टर्स के लिए अगर कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो आपको सिर्फ वो पैसे खर्च करने होते हैं जो आपको अपनी डिग्री वेरिफिकेशन में या फिर आपको GRE देना या IELTS देना उसमें चाहिए. इसके अलावा कोई पैसा खर्च नहीं होता. Samir Arif has raised hand. Why don't you unmute yourself and ask your question? Yep. Samir. Assalamu alaikum. I hope you are doing well. Thank you so much first. मुझे बस ये पूछना था कि like कनाडा के लिए मैं जो अप्रोच करूँ. For instance कि मेरा just अभी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है in computer engineering, ठीक है, और मेरा CGPA 3.7, right? अब लोग मुझे ये कह रहे हैं कि like आप जो है ना वो फुल ब्राइट के लिए अप्लाई ना करें. ऑब्वियसली बात है कि वो बॉन्डिंग वाला सीन है और आई एम लुकिंग फॉर यू नो कि जो है सेटलमेंट का भी कोई सीन हो ना. सो समहाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कनाडा और जर्मनी. सो सजेशन ये चाहिए थी आपसे कि जर्मनी को प्रेफरेंस दी जाए या फिर कनाडा को. इफ कनाडा सो फुल फंडेड के लिए क्या सीन है, बिकॉज यू नो कि इतनी ज्यादा फीसेस एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना काफी मुश्किल होता है. थैंक यू सो मच. No, totally makes sense. Samir, कनाडा और जर्मनी वाला जो सवाल है ना उसका जवाब जो है like we would not be able to say that to make that decision for you. Like what's more important to you? आपको डिसाइड करना पड़ेगा after making like do some research on it. यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना लें in both countries. क्वालिटी ऑफ लाइफ की आप थोड़ी रिसर्च कर लें कि किस तरह है, कहाँ पे you would like to live for 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, और अगर आप प्लान कर रहे हैं सेटल करने का तो कौन सा एरिया है जो आपको ज्यादा पसंद आएगा. सो दैट्स हाउ यू कैन लाइक गो अबाउट मेकिंग दैट डिसीजन. दूसरा क्वेश्चन आपका था अबाउट I was reading the comments. Yeah, so I think the first thing you said कि कौन सा कनाडा और जर्मनी में कौन सा बेटर होगा. The second thing remind us ताकि हम आपको उसका जवाब दे सकें. Well, both of us have sort of, हमें एक पार्ट का वो याद है, दूसरा पार्ट याद नहीं है, so दोबारा से you can mute yourself and let us know what was the second part of your question. Yeah. I'm going through these questions here in the chat, and some of these are very similar to what he just asked. So somebody is asking कि कौन सी best scholarship है. What is the best scholarship for those who want to go with their kids for PhD? मैं सवाल है कैसे जवाब दूँ, मुझे please को explain करें. So the thing is, question here is कि आप ऐसे किस PhD किस country जा सकते हैं जहाँ पे it'll be easier for you to go with kids. There is honestly इसका जवाब हम नहीं दे सकता है. इसका depend करता है कि आपका scholarship आपको support provide कर रही है बच्चों के लिए कि नहीं. Fulbright करती है? Mostly scholarships नहीं करते, right? What they do is for Fulbright में आपको example देता हूँ. Fulbright में
your dependents जिसमें आपका spouse और आपके बच्चे they can join you after the first semester, but they don't pay you any additional they amount. don't pay you additional amount. It's your responsibility to like take care of their expenses. Second year हमारे program का I was on a dependent visa. मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी और मैं फरदाद के वीजा पे यूएस वापस आई थी और उस टाइम पे Fulbright didn't provide for any additional amount. We were living off of a one stipend. और हो जाता है stipend generally इतना होता है कि आप एक बहुत लग्जरी वाली लाइफ नहीं गुजार सकते, बट एक बेसिक लाइफ आप आराम से गुजार सकते हैं कि आई थिंक वी हैड अ स्टाइपेंड ऑफ $1,700 एंड वी दो लोग आराम से हमने रह भी लिया उसमें और उसमें हमने ट्रैवल भी किया था काफी. I'm sure the situation changes when you have kids because कुछ expenses होते हैं जो कि जिनका खर्चा होता ही है. So for that you have to see कि if you have enough resources to be able to afford the expenses for your kids. अगर आपके पास इतने हैं तो फिर आप किसी भी स्कॉलरशिप पे चले जाएं, मैनेज कर लेंगे. Sameer, the second part of your question, let us know वो हमारे ज़हन से निकल गया था. Somebody is asking, are there any master's fully funded scholarships in Saudi Arabia? That's a very interesting question, and I do not know, but it'll be worth checking on the scholarship network group. Yeah, I've seen posts जिसमें वो मदीना यूनिवर्सिटी के और मिडिल ईस्ट में दूसरे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके आते हैं, लाइक हमाद बिन खलीफा, आई थिंक दैट इज इन कतर, तो उसके भी स्कॉलरशिप्स हैं, तो देयर आर, तो आप चेक करो. किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के से कोई स्कॉलरशिप था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट लुक इनटू इट. सो द नेक्स्ट पर्सन जिसने हैंड रेज किया है उसामा असलम. व्हाई डोंट आई हैव this is 3 boys in a row. Can we please like Assalamu alaikum. इसके बाद I want you to like pick someone. I'm going according to the order. Let's pick. Am I audible? Yes, you are. Osama. मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कॉमनवेल्थ के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन एचएससी की डेट गुजर गई थी, तो क्या मेरी वो भी एक्सेप्ट हो गई या नहीं? और मैंने हंगरी के लिए अप्लाई कर चुका हूँ और मैंने एचएससी पे भी वहाँ पे उन दोनों यूनिवर्सिटी का डाटा प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन उसके फर्दर मुझे प्रोसेस का नहीं पता, और काइंडली अगर आप हो सके तो उसमें मुझे गाइड कर दें. अच्छा, कॉमनवेल्थ और जो एचएससी के नहीं, स्टिपेंडियम हंगेरिकम एंड कॉमनवेल्थ बोथ आर स्कॉलरशिप ऐसे हैं कि जिसमें आपको नॉमिनेटिंग एजेंसी जो आपकी कंट्री की होती है वो करती है नॉमिनेट, तो एचएससी इज दैट नॉमिनेटिंग एजेंसी. अगर कॉमनवेल्थ के एप्लीकेशन में आपने एचएससी के डेडलाइन पे फिल नहीं किया एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो कंसिडर नहीं होगी. व्हाट यू कैन डू इज के लाइक you try to reach out to HSC and see if they can like give you that leeway to submit your application, but most probably मुश्किल होगा. HEC से like it'll be very hard to get in touch with HEC about this as well. So अगर इस साल मिस हो गया तो अगले साल आप जरूर दोबारा ट्राई कीजिएगा. And make sure कि जो हंगरी वाली है उसके जो डेडलाइंस है ना, वो आप दोनों प्लेटफॉर्म पे जो उनके डेडलाइंस उसके अकॉर्डिंगली आप एप्लीकेशन सबमिट करें. Before we take someone else, I just want to answer this question. It's one of the most asked questions. What's the minimum GPA required for scholarships in most scenarios? Is having a 3 CGPA necessary? Yes, if you have 3 and above, that puts you in a safe zone. पर ऐसा नहीं है कि अगर आपका 3 से नीचे GPA होगा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. We know people जिनका 3 से नीचे है और वो हार्वर्ड गए हैं, वो येल गए हैं, उनका फुलब्राइट भी हुआ है, वो और बहुत सारे और competitive programs like scholarships में भी they have managed to get through with a 2.7, 2.9. So ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन अगर आपका 3.3 है, 3.4 है, so that makes your case much stronger. आपका GRE थोड़ा कम है लेकिन आपका GPA अच्छा है, वो कवर हो जाएगा. So it's better if you have a good GPA, but don't lose hope if you don't. And there are scholarships जिसमें जो है GPA की requirement नहीं होती. So like when you are shortlisting scholarships जिस पे आप apply कर सकते हो, तो उसमें ये filter लगा के देख लें. For example, road scholarship है, right? वहाँ पे 3.7 से ऊपर चाहिए. नाइट हेनेसी स्कॉलरशिप जो स्टैनफोर्ड का है, ये मतलब पाकिस्तान से रोड हर साल सिर्फ एक सेलेक्ट होता है, नाइट हेनेसी भी सिर्फ एक सेलेक्ट होता है. सो दीज आर वेरी कम्पिटिटिव प्रोग्राम्स जिसमें यू नो के हाई जीपीए चाहिए होगा. I don't think नाइट हेनेसी का कोई कोटा है, लाइक दुनिया भर में कहीं से भी सेलेक्ट हो सकता है. हाँ, 1%, राइट? 1. तो ये चीजें हैं. जीपीए की जो रिक्वायरमेंट इज वेरी लाइक बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल. लुक फॉर स्कॉलरशिप्स, शॉर्टलिस्ट देम जहाँ पे जीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है. Let's take another person. Let's take Isha. Isha, please unmute yourself and ask your question. Hello.
I just wanted to ask that मेरा अभी last year है in university, so my result will come in around August. So what is the best time that I apply for the scholarships so that I don't waste a year and I go after I graduate? Okay, and you want to go for your master's right after your undergrad. You don't want to wait to get some work experience. Yeah, probably. Well, in that case, you should start looking into different scholarships now. कि आपको अभी अगर GRE IELTS देना है तो look for that. और जैसे ही अगले साल application cycle open होगा, जैसे Fulbright का I think होगा March April में, apply right away. साल in any case आपका जाएगा क्योंकि process में ही साल लग जाता है. Unless आप directly यूनिवर्सिटीज पे अगर आपने इस साइकिल में अप्लाई किया हो, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर जनवरी आर द डेडलाइंस फॉर यूनिवर्सिटीज, तो आप जब अभी अप्लाई करोगे तो अगस्त में सितंबर में but she wants to specifically apply for scholarships. देखें, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू सी इज के उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में डिग्री की रिक्वायरमेंट है कि नहीं. फॉर एग्जांपल फुलब्राइट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो मार्च में, अगर डिग्री आपकी अगस्त सितंबर में आ रही है तो दे एक्सेप्ट दैट. But other scholarships, they want that degree. They want कि वो transcript degree आ जाए, उसके बाद आप apply करें. So आपका time तो in any case लगेगा, क्योंकि अगर आप अभी इस साल भी apply 23 में भी apply कर लेते हो तो साल भर का process होता है अक्सर scholarships का. So keep that in mind. ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप अगस्त में graduate करो अपने undergrad से और सितंबर में आप एक नया program start कर लो, unless you apply without a scholarship like independently to different universities. So keep that in mind. Yeah, and your best bet would be to start looking into scholarships now, ताकि आप टेस्ट दे सको, ताकि आप एप्लीकेशन पैक बना लो, और जैसे ही एप्लीकेशन साइकिल ओपन हो फुलब्राइट का या कॉमनवेल्थ कब होता है? समर्स में आता है समटाइम, सितंबर में. I'm forgetting, but like अगस्त सितंबर में किसी टाइम पे आता है. तो जैसे आपके एप्लीकेशन पैक्स बने हुए होंगे और आप यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग. Let's take another person. Aksa Maksud. Hello, am I audible? Yes, you are. Yes, Aksa. अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे पास जो मतलब वर्क अपना अभी मैंने इसी साल ग्रेजुएट हुए, तो आई एम प्लानिंग फॉर फुलब्राइट ना. जैसे आप अभी बेसिकली कह रहे थे कुछ स्कॉलरशिप्स की कुछ प्रेफरेंसेस होती है, तो मेरा थोड़ा सा कस्टमाइज क्वेश्चन है कि मेरी जो एक्सपीरियंस है दैट इज बोथ इन डेटा साइंसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक अपना स्टार्टअप भी और इस तरह भी, एंड लाइक दैट इज बेस्ड ऑन डेटा साइंस. तो आप मैं दो प्रोग्राम्स में कंफ्यूज हूँ. आप मुझे अगर फुलब्राइट के प्रेफरेंस से सजेस्ट करें, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन और डेटा साइंसेस, क्योंकि मैं इन दोनों में अपना केस स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर सकती हूँ. तो लाइक व्हाट वुड यू प्रेफर मी ऑन द बेसिस ऑफ दैट. एंड सेकेंड ये कि जब फुलब्राइट की वो आप लोगों से अगर फुलब्राइट की जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए तो क्या आप लोग कोई सेशंस वगैरह ऑफर कर देंगे, ईदर पेड और अनपेड, बट लाइक कुछ ऐसा हो सकेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस वक्त आप लोगों से कांटेक्ट कर लूँ अपनी एप्लीकेशन रिव्यू वगैरह के लिए. थैंक यू. To answer your first question, Aksa, आपके पास पहले तो good job on it. आपकी दोनों जो आपके ऑप्शंस है ना, वो दोनों बहुत अच्छे हैं. दोनों में बहुत स्कोप है, दोनों में आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाएगी, डेटा साइंस भी और एंटरप्रेन्योरशिप भी. अगर आपको प्रेफरेंस का देखना है तो इन दोनों में से कोई भी आई थिंक फुलब्राइट के प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं है. एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं है फुलब्राइट के प्रेफरेंस लिस्ट में. What you can do on the other hand is that you can pick either of these and connect it to a large, like for example, like you could be talking about data science in public health. You can talk about data science in energy, right? You can connect it to some field जो के preference list में आता है. और like entrepreneurship में थोड़ा एक लेयर नीचे जाएंगे तो social entrepreneurship. Energy entrepreneurship. I know someone who did a degree entrepreneurship, but that in energy sector, like coming up with products and all. So this is like a very, you would have to make that decision कि अपने ग्रेजुएट डिग्री किस फील्ड में करना है, राइट? एंड दैट विल बी कनेक्टेड टू व्हाट यू वांट टू डू. तो स्पेंड सम टाइम ऑन दैट. यू विल लाइक डेफिनेटली आपको जो है ना अपनी प्रेफरेंस नजर आएगी कि कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है. बट वी डू नो पीपल जो बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम में गए थे फुलब्राइट पे, राइट? एंड लेकिन उन्होंने कनेक्ट किया किसी और फील्ड से. आपके पास जो दोनों आपके चॉइसेस है ना, वो ऐसे हैं जिनको आप किसी और फील्ड से कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन टॉक अबाउट डेटा साइंस, बिग डेटा एंड एजुकेशन, राइट? सो यू विल गेट द स्कोर फॉर एजुकेशन, बट आल्सो यू आर डूइंग अ डिग्री इन डेटा or data science, right? So that's what we recommend, that you should connect whichever one you pick, entrepreneurship, data science, to some other field जो कि preference list में आ रही हो. And Zainab Abdullah ने चैट में एक क्वेश्चन पूछा था about PhD scholarships for pharmacy. इस तरह के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि स्पेसिफिक फील्ड में है कि नहीं. This is something that we say when we answer such questions के
look for a program जिसमें आपका स्पेसिफिक आपके फील्ड का प्रोग्राम है, and then उसके बाद स्कॉलरशिप का देखें. Like in most cases, and for example जो फिजिकल थेरेपी के बारे में पूछ रहे हैं या फिर डेंटिस्ट हैं जो पूछ रहे हैं, तो like look for a program जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, और once you do that उसके बाद ही आप कह सकते हो कि स्कॉलरशिप इसमें है कि नहीं, like यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो या फिर through big scholarship programs like Commonwealth and Fulbright. I want to answer Aksa's second question. She had asked if we'd be doing any sessions. We'll probably do a few more. हमने इस पे content बनाया हुआ है. We have videos on writing personal statements, statement of objectives. वो YouTube पे हमारे available हैं. और हमने इसलिए बनाई थी because initially हमने बस शौक में applications review करना शुरू कर दी थी, because it was for us it was a way of giving back, and we enjoy reviewing applications and talking about Fulbright. But वो इतना ज़्यादा बर्डन हो गया था हम पे कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे थे, इसलिए हमने वो वीडियोस बनाई थी. सो पहले तो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देखें. हम प्रॉबेबली जूम सेशन कर लेंगे, बट इट वोंट बी पेड. वी डोंट डू पेड फुलब्राइट सेशंस एट ऑल. फुलब्राइट से हमें लाइफ में इतना फायदा हुआ है, just generally completely changed our life trajectory. We would absolutely not be doing a paid version of this. हम बाकी स्कॉलरशिप के sometimes statements review करते हैं paid, but Fulbright के लिए नहीं होता. बट इसके अलावा अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मैसेज करें, हमें ईमेल कर दें, डीएम कर दें, एंड वील ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज वी कैन. Let's take another. Yeah, let's take another question. Aisha, you can ask your question. Assalamualaikum. I actually have so many questions. First of all, actually, I don't know anyone is from College of Home Economics applied for scholarship. So we have a very different degree at that time. We have a 4-year bachelor programs after metric and 2-year master's program. So I don't know, is this eligible for scholarship? So I really want someone to guide me on this thing. And secondly, my question is that do we have to give IELTS before applying for scholarship? And third is that I have actually shortlisted Sweden for scholarship, and I find a program, and उनकी deadline जो है वो है January 16 January. Okay. And I don't have any volunteer experience as well. मेरा work experience above 10 plus years. So I don't know, should I apply and then I give IELTS, and or I should apply for IELTS and then I go for scholarship? आशा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, दोबारा बताएं. Okay, College of Home Okay. Economics का जो प्रोग्राम है, is that eligible for scholarships or not? Like honestly, specific to that degree हमें idea नहीं है. Like what I will recommend is कि I've never seen it though. Yeah. मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम देखा नहीं है. But scholarship network पे जाके जो है ना आप search कर लें, and I'm sure you will find people who have the same background as you and who are applying or have applied to scholarships. तो ये चीज़ जो है, like you can figure it out. But it is important before that कि आप बजाय ये सोचें कि आपके प्रोग्राम वालों के लिए स्कॉलरशिप है कि नहीं है, like decide which program do you want to apply in. आप अपना मास्टर्स या पीएचडी किस प्रोग्राम में करना चाहते हो, उसके बाद जो है ना I've decided. I've not decided, but मैंने अभी एक shortlist किया था, and that is from Sweden. स्वीडन से पढ़ना है, लेकिन what degree do you want to do? It was international business and brand management. And do you have work experience in that? Yeah, I'm have- working. Yeah, basically, I'm working as e-commerce manager and branding as well for my own firm right now. So I just want to know that either I'm eligible, because मुझे अपनी GPAs हमारा नहीं होता, it's yearly program results होते हैं, तो उसके accordingly, क्योंकि obviously मतलब वो लोग तो GPA के ऊपर ही जाते होंगे, तो उसको मुझे convert अगर आप करना होगा. अगर आप करवा लेंगे, जिससे HEC can attest कि जो आपकी डिग्री है वो that's equivalent to undergrad, पाकिस्तान के undergrad की equivalent है, और obviously कोई ना कोई ranking system होगा, या grade होगा, या GPA नहीं होगा तो कोई तरीका तो होगा, pass fail होगा, so वो that should not be an issue. और so
होम इकोनॉमिक्स वाली बात को साइड में रखते हैं. What I understand this point is कि आप स्वीडन से डिग्री करना चाह रहे हो, आप already you have a work experience in e-commerce and you want to do a program in something similar, relevant. आप international business and branding में करना चाह रहे हैं. So I think you have a solid case given that you have work experience on this. What you need to do is कि आप स्वीडन में जो scholarship हो, आपको अगर आपको कोई scholarship मिल गई है already, like the one that, like, have you found something? No. What I mean to say is that have you identified which scholarship you want to apply to? Can you hear me? आपने ये issue with us? I'm not sure. But like that's how you can like proceed, right? हाँ, to complete that, अगर आपने ये identify कर लिया है कि आपने किस scholarship में apply करना है, तो the next step would be for you to go to its website and see कि आपका eligibility criteria meet होता है कि नहीं. अगर वो कहते हैं कि उन्हें IELTS चाहिए before applying for the application, then you need to take IELTS before that. Like you'll have to send your scores. अगर वो कहते हैं कि उन्हें IELTS बाद में चाहिए as language proficiency, then you can apply, go ahead with the application, and then later on जब अगर आपका first stage में selection होता है तो फिर आप IELTS दे देंगे. And this is also like a good question कि there are programs in Pakistan जो parallel में चल रही थी, right? 2 years वाले bachelors, फिर उसके बाद masters MPhil, और वो programs जिसमें annual system है, GPS नहीं है, तो how, like we don't know the exact specifics of it, but it's a good thing to look into before you start applying and figure out कि requirements क्या होंगी, and it will really help, like if you find someone who has the same background, और उससे आपको जो है ना अंदाज़ हो जाएगा. Scholarship network is the best place for this. इस तरह की जो भी specific questions है ना, उसको आप post डालें scholarship network में, क्योंकि वहाँ इतने लोग हैं, कोई ना कोई आपको किसी ना किसी का similar case होगा. और वो आपको उसका help कर सकते हैं. Yeah. Let's take another question. Arif Jamal. Arif, please unmute yourself and ask your question. जिन्होंने hand raise, sorry, I think Arif Jamal ने hand raise नहीं किया था. Okay. I will ask Muattar Ijaz. अस्सलाम वालेकुम. बहुत distortion है Muattar. Will go to Iza Amreen. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Very nice session. मैंने 2-3 questions पूछने थे, but I will try कि मैं आपको short करके बता दूं. मैंने BDS किया, after that I have done masters in medical education. तो अब मैं PhD के लिए apply कर रही हूँ. तो मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि whether, क्योंकि PhD in medical education scholarships बहुत कम मुझे नज़र आए हैं. So can I apply for PhD in education और बाद में postdoc कर लूँ medical education में? Is this an option for me? या फिर PhD in dental education की तरफ, dental public health की तरफ मैं जा सकती हूँ? मुझे एक तो ये पूछना था कि मैं मास्टर्स जिसमें किया है वो switch कर सकती हूँ field for PhD? This is my first question. And second one is कि अगर मैं medical education में ही PhD pursue करना चाहूँ, तो जिस तरह हम directly supervisors को अपना proposal भेजते हैं और ask for them कि if they are interested and they like our proposal, तो वो उसको आगे हमें recommend करते हैं for fully funded scholarship. तो ये एक ऑप्शन बन सकता है, और which option is better, either applying through the organization जो है scholarships की, या फिर direct route ज़्यादा ठीक होता है, easy होता है, मतलब because I'm married, I have 2 kids, तो मुझे वो सब भी देखना है साथ साथ. अच्छा, let me take a stab at that. सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि people who have done their masters in Pakistan, like, don't try to look at programs abroad and put them in the same category. कि अगर medical education का नाम है तो शायद वही नाम वहाँ पे होगा. Like usually public health में और इस health के उसमें community health education is the same as medical education. I don't know कि अगर ये specifically professions पे targeted है, but if it's like targeted to provide health promotion activities and उस तरह की education to the community, तो community health का जो sub group है उसमें you can easily find like PhD programs, और उसमें scholarships में भी available हैं, directly at universities वाले भी available हैं. तो like make that decision, थोड़ा research करें इस पे, see what do you want to do. अगर आप सिर्फ dental से specific कोई program करना चाह रहे हो या फिर generally community health के, वो भी 2 different directions, right? If he goes for dental, तो that's a different route. But अगर education में करते हैं, because medical education में आपकी, अगर आपने पहले अपना masters किया हुआ है, education generally is very
welcoming towards other fields. So बहुत like it's very easy to switch to education is what I feel. मैं खुद education field से हूँ, so I've seen a lot of people with different backgrounds moving into education for their PhD even. फर्क ये है कि आपको अपना जो research area होगा ना वो specify करना पड़ेगा, and that has to lead in from your masters. Okay, you can't be like, probably you can, and I would suggest that you double check this with someone who has done something similar, क्योंकि हम आपको information दे तो रहे हैं, but based on what we understand, and that may not be 100% correct about this situation. लेकिन जो मैंने देखा है वो अमूमन ये है कि बहुत सारे different field के लोग education में PhDs करते हैं और फिर अपने research को इस तरफ focus करते हैं कि वो master से somehow connected होती है. That they can say catch up, like for example, you've done in medical education, you could be doing a PhD in education with a focus on specifically in medicine, or like working something that's focused on medicine or hospitals or something to do with public health. But again, do check with someone who has done something similar, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो किसी if someone has gone through the process, they'll be able to tell you better. हमने PhD के लिए खुद भी apply नहीं किया हुआ, तो हमें इतना specific case का नहीं पता. दूसरा आपका सवाल ये था कि would it be better अगर आपका supervisor आपको recommend करे? PhD के लिए अक्सर जो है ना आपको grants और funding मिल जाती है. बहुत सारे लोग हैं जो scholarships पे नहीं जाते PhD के लिए, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली ग्रांट्स मिल रहे हैं. क्योंकि अगर आप HEC के थ्रू जा रहे हैं तो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, वो आपसे कुछ ना कुछ लिखवाएंगे गारंटी में. अगर आप फुलब्राइट या किसी ऐसी और प्रोग्राम के साथ जा रहे हैं तो दे वुड वांट यू टू कम बैक, एंड पीपल फाइंड इट वेरी हार्ड टू कम बैक आफ्टर स्पेंडिंग व्हाट 5-6 इयर्स इन अमेरिका. बच्चे बड़े हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, दे फाइंड बेटर जॉब्स. इट्स लाइक जनरली आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सेड नो टू स्कॉलरशिप्स फॉर PhD. और अगर आपका सुपरवाइजर को आपका रिसर्च इंटरेस्ट पसंद आ जाए तो दे कैन इंक्लूड यू विद इन द प्रोग्राम ग्रांट कि हाँ ठीक है आपको फंडिंग मिल जाएगी. स्पेसिफिकली लाइक तो थोड़ा सा डिफरेंस है यूएस में PhD के लिए अप्लाई करने के लिए एंड यूके यूरोप में और कनाडा में अप्लाई करने के लिए. सो इन यूएस यू अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. यूके यूरोप और इवन इन कनाडा आपको सुपरवाइजर को रीच आउट करना होता है. सुपरवाइजर जब आपको एक्सेप्ट करेगा आपकी प्रोफाइल और आपका रिसर्च इंटरेस्ट, देन दे रिकमेंड यू फॉर फंडिंग. तो ये थोड़ा देख लें, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू अप्लाई यू वुड हैव टू लाइक act accordingly. So if I was in your position, what I would do is I would do both. I would look for scholarships that probably do not require me to come back, because अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, like just ये मेरी personal preference होती है कि शायद मैं चाहती कि अगर 5-6 साल एक जगह रह रही हूँ तो मेरे पास ऑप्शन हो कि मैं वहाँ और ज़्यादा रह सकूँ और फिर बाद में वापस आ जाऊँ. So if I was in your position, I would look for scholarships that fit my profile, but then I would also reach out to professors directly and ask them if they have if they're looking, like discuss my research interest with them. लेकिन उससे पहले obviously आपको खुद research करनी पड़ेगी कि आप exact research topic क्या उठाना चाह रहे हैं. But I'll probably do it in education. So someone is asking, can we get any scholarship after 60 years education in Pakistan? Yes, I think. After how many years? 16 years. 16 years के बाद ही आप करते हो. Undergrad county internationally वो होता है जो 16 years of education होती है. जो BA होता है ना वो उसको I think full equivalence नहीं मिलती है. तो 16 years education के बाद ही मास्टर्स अप्लाई होता है. लाइबा हसन पूछ रही है, are scholarships safe for girls who are traveling alone and for the first time? Yes, they are very much. Depend. देखिए scholarships तो safe हैं, depend करता है आप जा कहाँ रहे हैं, लेकिन generally ऐसा कोई बात सुनने में नहीं आई है कि जी कोई अकेले गया था और कुछ ऐसा नहीं. बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग अकेले आते हैं without having any ties to the country. Like बहुत सारे लोग जो हमारे साथ फुलब्राइट पे आए थे उनका कोई जानने वाला नहीं था, कोई दोस्त नहीं था यूएस में, सब कुछ अकेले उन्होंने खुद किया. कुछ लोग मेन सिटीज में आए थे, कुछ लोग बहुत like मिजूरी में कुछ टाउन्स में आके रह रहे थे, but that was also very safe. तो कोई इशू नहीं होता. पेरेंट्स को कन्विंस करने में समटाइम्स लोगों को इशू होता है, but otherwise जब आप पहुंच जाते हो, पेरेंट्स को अगर पैसे ना देने पड़े तो फिर कन्विंस करने में इतना बड़ा मसला नहीं है. हाँ जनरली अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो आपका केस स्ट्रांग हो जाता है, बट सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं होता. मैं खुद अकेले नहीं हूँ कैम्ब्रिज में, कोई इशू नहीं था. लाइक इनफैक्ट तो आई लाइक it's completely safe. No information about undergraduate programs. So जो ये स्कॉलरशिप हमने शेयर किए इसमें कुछ में अंडरग्रेजुएट की स्कॉलरशिप भी हैं. तुर्की वाले में है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, नेक्स्ट Global Korea Scholarship. All of these are undergraduate scholarships as well. You can go on our Instagram. हमारे guides के section में हमने undergraduate की जो specific scholarships हैं in Pakistan and abroad as well उस पे reel बनाए हुए, तो check it out. Somebody is asking, do we need admission before getting selected for scholarships? Not necessarily. That depends on the scholarship. Fulbright के लिए आपको admissions नहीं चाहिए. आप पहले Fulbright के लिए select होते हैं, फिर Fulbright आपका हाथ पकड़ के आपको पूरा process करवाता है, literally.
आपको कुछ नहीं करना होता, वो सारा प्रोसेस आपके लिए खुद करते हैं, which is why Fulbright is one of those amazing programs जिसमें अगर आप शुरू के इंटरव्यू और प्रोसेस से निकल जाएं तो आप बस फिर चिल सीन है, बहुत ईजी है. बट देयर आर स्कॉलरशिप जिसके अंदर आपको यूनिवर्सिटीज के लिए अलग से अप्लाई करना होता है. आपको यूनिवर्सिटी से भी एक्सेप्टेंस आती है, आप इन द मीन टाइम आप एप्लीकेशन लाइक स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन प्रोसेस में भी होते हैं, व्हिच आई फील लाइक इज जस्ट डबल द स्ट्रेस. बट या सो कुछ स्कॉलरशिप में आपको अलग से अप्लाई करना होता है, कुछ में नहीं करना होता. So there is this I'm in my third year. When is the best time looking in for and applying for scholarship? This is the best time to like look for scholarships. कि when we were in our undergraduate, मुझे ये clear था कि यार मैंने scholarship पे जाना है और मुझे US जाना है. This would be like, a good time to like become familiar with what's out there. And like know कि ये programs हैं. अगर आपने बिल्कुल work experience आपको है कि बस मुझे foreign masters पे जाना है, फिर आप अपने 4th year में like last semester मैंने अपना GRE last semester में दिया था, senior year के last semester में. So I could apply in this cycle right after my undergrad. But yeah, like, अगर आपको work experience चाहिए तो बस फिर सुकून करें कुछ टाइम के लिए, work experience इकट्ठा करें, देख लें कि इन कॉलेज में अप्लाई करना है. But then yeah, 3rd year is probably a bit too soon. 4th year, senior year. Okay, this comment I want to talk about it. There is this question ये comment है कि I did my preliminary research and when I'm meeting eligibility criteria, there is no scholarship available. So like, no scholarship available. Don't jump to conclusions like that. कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो है ना थोड़ा आपको शायद मॉडिफाई करना पड़े प्रोग्राम को, थोड़ी अपने जिस उससे आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसको मॉडिफाई शायद करने पड़े, बट देयर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल. एंड स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल एंड फॉरेंसिक साइकोलॉजी, देखिए व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हर जगह पे सेम एजुकेशन सिस्टम नहीं होता. अब पाकिस्तान में शायद मास्टर्स आपको क्लिनिकल और फॉरेंसिक साइकोलॉजी में मिल जाए, यूएस में नहीं मिलता. यूएस में क्लिनिकल साइकोलॉजी पीएचडी होता है. मास्टर्स आपको मिल जाएगा काउंसलिंग साइकोलॉजी में और सम अदर फील्ड जहाँ क्लिनिकल ना हो. तो लाइक थोड़ा contextualize करें and do more research. If you have reached this conclusion based on like 3 hours, 4 hours, 5 hours, 10 hours of research, and that's not enough. Spend some more time on it and figure out कि आपका जो है ना क्या way forward बन सकता है. Also, what I'd recommend is that you change keywords. कि अगर आपको forensic psychology में नहीं मिल रहा तो देखें कि psychology में और कौन से ऐसे majors हैं जो कि closest हो सकते हैं आपके लिए, या कौन सी scholarships हैं जो psychology में select करती है candidates को, या फिर psychology. What was I saying? Hold on. I was saying कि जिसमें लोग जाते हैं psychology degrees करने के लिए, और फिर within that you can have a specialization जो कि आपको अपनी scholarship specific करने की जरूरत नहीं, वो अपनी degree specific कर लें. What I mean by that is, for example, अगर मुझे education technology में masters करना था, but then I want to also very specifically do a masters in education technology in developing countries, or like developing countries or countries that do not have a lot of resources. Like मेरा इतना specific interest है, so I can just be doing a master's in education technology, and then once I'm in the program, I could be looking for courses that sort of cater to my interest specifically. I don't know if that was a good enough example or not, but that was the best I could come up with in this moment. But point is कि आप एक तो keyword change करें, दूसरा थोड़ा सा generic कर लें अपनी degree को, और जो अपने courses लें उसको ज़्यादा specific कर लें. Yeah, I hope I was able to explain that. Yeah. It's been 10 years since I graduated. Does this time gap decrease chances of getting a scholarship? It's a good question. लेकिन कुछ scholarship programs में age limit होती है. Like you would have to look at those details and understand कि किसके लिए आप eligible हैं, किसके लिए नहीं. Fulbright के लिए you are eligible because Fulbright में इस तरह की age limit नहीं. आप eligible हैं, but that will also come down to the reviewer जो आपके application review कर रहे हैं. अक्सर रिव्यूअर्स का थोड़ा सा बायस होगा इफ यू हैव अ लॉन्ग गैप. अगर आप 10 साल से आपका 10 years का गैप है और इस दौरान अगर आप काम भी नहीं कर रहे हैं, लाइक अंडरग्रेड और मास्टर के बीच में 10 साल का गैप होना इज नॉट एन इशू, बट अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसके बीच में, देन यस, लाइक आईड बी क्वेश्चनिंग कि फिर अगर 10 साल में आपने कुछ नहीं किया है तो आगे फिर आप क्या, लाइक आई एम जस्ट सेइंग इट विल कम डाउन टू द रिव्यूअर. सो थोड़ा सा इशू होगा. तो 10 साल के गैप में आप क्या कर रहे थे, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट. उसके बारे में बात करना पड़ेगा. Yeah, are there any fully funded scholarships in Canada? Yes, there are. हमने इसके बारे में बनाई भी है. 1 year is for PhD and McCall-McLean is for masters, and इसके अलावा university specific भी हैं, so look into that. Let's take another question. I see Sonia here. Sonia had also sent us a message separately, so let's take Sonia's question. Assalamu alaikum, Sonia. Please unmute yourself and ask your question. I did see your DM as well. Walaikum salam.
मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश में और बीएड एमएड किया है जो इक्विवेलेंट होता है एजुकेशन के। मेरे पास 2 मास्टर्स हैं। तो मैं एमफिल एजुकेशन कर रही हूँ और कोर्स वर्क मेरा नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने पूछना ये है कि अब मुझे जब मेरा टॉपिक अप्रूव हो जाए डिपार्टमेंट से, तो क्या ऐसे हो सकता है कि मैं उस रिसर्च के लिए बाहर अप्रोच करूँ किसी मतलब प्रोफेसर को, या एमफिल इधर कंप्लीट कर लूँ अपना रिसर्च वर्क और उसके बाद मैं पीएचडी के लिए करूँ? ये क्वेश्चन है। आप कह रहे हो कि आप एमफिल आपका कंप्लीट होने वाला है, राइट? कोर्स वर्क कोर्स वर्क जी जी। ओके। मुझे नहीं अंदाजा कि आप कोर्स वर्क करके क्या फिर अपना रिसर्च ट्रांसफर करोगे किसी बाहर प्रोग्राम में। आई एम नॉट श्योर दैट्स पॉसिबल, क्योंकि आपको डिग्री तो यहाँ कंप्लीट करनी पड़ेगी, राइट? तो यहाँ अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे आप एमफिल की, और फिर पीएचडी के लिए आप किसी प्रोफेसर को रीच आउट करोगे कि मैंने अपना एमफिल इसमें किया है, कोर्स वर्क तो हो गया था, मेरा रिसर्च एमफिल में ये था और अब मुझे फर्दर पीएचडी करनी है। मुझे तो यही समझ आता है ठीक है ये जी, प्रोसेस का, क्योंकि ये मैं पूछना चाह रही हूँ। सिर्फ कोर्स वर्क के बाद अगर आप किसी प्रोफेसर को रीच आउट करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज वो डिग्री आपको ट्रांसफर नहीं करने देंगे और आपके पास कोई केस भी नहीं होगा बताने को, बिकॉज आपने तो रिसर्च की नहीं है, आपका एमफिल का रिसर्च तो भी होनी है। बट दिस वुड बी अ गुड टाइम कि आप जो है ना प्रोफेसर्स को रीच आउट करना शुरू करें, पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें, बिकॉज यू ऑलरेडी आर डूइंग अ रिसर्च। तो उस टाइम पे आप आराम से बल्कि ज्यादा बेहतर होगा कि आप पहले देखें कि कौन से प्रोफेसर कौन से रिसर्च कर रहे हैं, और फिर अगर एमफिल में आप अपनी रिसर्च को थोड़ा सा ट्वीक करके उसके अकॉर्डिंगली कर लें, क्योंकि फिर देन लेटर व्हेन यू अप्लाई फॉर पीएचडी यू कैन ऑलवेज से कि मैं आपकी रिसर्च फॉलो करते आ रही हूँ और मेरी अपनी रिसर्च एमफिल में बहुत स्पेसिफिक है टू व्हाट यू आर डूइंग इन योर डिपार्टमेंट, सो व्हिच इज व्हाई आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर टीम एंड दैट मेक्स फॉर अ सॉलिड केस। ठीक है, so there are questions. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. In the comment, can you please do a session on how to invest later on? Yes, we'll do that. What about living expenses there, even if it's fully funded? Fully funded का मतलब है कि वो living expenses भी cover कर रहे हैं. So yeah, that's the great part about it. और वो इतना अमाउंट होता है कि आप बहुत आराम से अपने लिविंग एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं और आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। कि हमने ना सिर्फ बहुत आराम से हमने अपने 2 साल यूएस में लगाए थे, हमने ट्रैवल भी बहुत ज्यादा किया था, एंड इवन देन वी हैड इनफ लेफ्ट टू save a little bit as well. Yeah. अच्छा, somebody is asking about question about Erasmus Mundus के they are saying कि उनके programs अगर आपके इंग्लिश में हैं तो फिर आपको IELTS देने की जरूरत नहीं है, but later on जैसे अगर नेटिव कंट्री का लैंग्वेज नहीं है तो फिर देने की जरूरत है। Like this is a requirement आप दें। I in fact know someone who was a very very good candidate for this scholarship. They almost got through the process, but उनका IELTS टाइम पे नहीं आया था। IELTS दे दिया था, लेकिन उसका रिजल्ट टाइम पे नहीं आया, so they canceled the application. So IELTS दे दें और टाइम पे दे दें, लास्ट मिनट डे तक वेट ना करें। If I apply for a scholarship, is it possible I can call my partner or spouse? Yes, you can. Scholarships में मतलब dependents को sponsor करने का ऑप्शन होता है वीजा के टर्म में, not financially. तो टाइम बता सकते हैं, जैसे अगर आप फुल ब्राइट पे आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट 6 months खुद आना होता है और 6 महीने के बाद अपने पार्टनर को लेकर आ सकते हैं, बट ऑप्शन होता है, आप ला सकते हैं। I have recently graduated and want to apply for grad studies abroad, but most of the universities are asking for work experience. What to do about it? Most of the universities are asking for work experience. अच्छा, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम पे अप्लाई कर रहे हैं, बट अगर most of the universities do like आपके प्रोग्राम में if they're asking for work experience, then you know what you have to do. You have to get some work experience. Or tweak your program a bit के जहाँ पे work experience की requirement ना हो, like थोड़ा एक layer नीचे जाए specific हो। या प्रोग्राम चेंज करें या फिर थोड़ा टाइम लगाएं और वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा करें। और वैसे जनरली भी, that's just my opinion on it, but I encourage people to get some work experience before they go for their masters. और इसकी वजह ये है क्योंकि आपको अंडरग्रेड में, हम अक्सर लोग जब हम अंडरग्रेड का अपना मेजर सिलेक्ट करते हैं ज़्यादा पता नहीं होता, इट्स जस्ट बेस्ड आउट ऑफ अ वेरी बेसिक रिसर्च और वेरी बेसिक इंटरेस्ट कि हाँ चलो इसमें कर लेते हैं। अक्सर लोग क्या होता है, अंडरग्रेड जब आते हैं, अंडरग्रेड जिस मेजर में आते हैं उसी मेजर के साथ 4 साल वो अपना अंडरग्रेड कंप्लीट करते हैं, नॉट बिकॉज दे लाइक द मेजर, जस्ट बिकॉज दे एबल टू गेट थ्रू इट। ठीक है, बस कर लिया ऐसे, राइट? अब अगर आप उसी में अपना मास्टर्स भी करें, देन यू आर रियली कमिटिंग, यू आर कंटिन्यूइंग टू कमिट टू दैट फील्ड, इवन तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब आप वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया होता है कि अच्छा मुझे ये पसंद आ रहा है और ये नहीं पसंद आ रहा। So I generally encourage people to go for some work experience, बेशक साल भर के लिए काम करें, but that will really change your ideas around what interests you and also what you want to pursue later in your grad school. और दूसरी वजह इसकी ये भी है कि जब आप फॉर अंडरग्रेड से मास्टर्स से पीएचडी जंप कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट ही हैं थ्रू आउट। आपको एक्चुअली पता नहीं है कि इसका करना क्या है, ये जो डिग्रियां आप इकट्ठी कर रहे हैं इसके साथ होगा क्या बाद में। एंड इट्स रियली सैड, बट आई इन फैक्ट
In fact, couple of months back, I met somebody who had done a lot of degrees. उन्होंने पहले एक अंडरग्रेड किया, फिर उन्होंने 2 मास्टर्स किए, फिर उन्होंने पीएचडी भी कर लिया, पाकिस्तान से उन्होंने किया था, उन्होंने पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया. अब उन्हें समझ नहीं आता वो करें क्या इसके साथ, क्योंकि पीएचडी के साथ she was over qualified for a lot of jobs. So like she was like, I don't know what to do with it because she had just been studying for like I don't know how long, like a really long time. So while it is for some people just know कि undergrad के बाद फौरन पीएचडी पे चले जाते हैं, but our recommendation मैं कह रहा हूँ अगर इतने पढ़ लिया तो पढ़ाना शुरू कर दें, like go to university. हाँ, but यही ultimately रहता है कि आप academia में चले जाएं, but yeah, and then figure it out वहाँ से. Yeah, but still like that's also a thing, right? Not all good researchers are good teachers. ये एक अलमी है कि सारे अच्छे researchers अच्छे teachers नहीं होते, but ये that's what ends up happening कि when you've been studying all your life, most PhD scholars they just go in academia. ठीक है, going to some questions in the chat. How to overcome fear of not applying, like fear of failure? As you said, it's a fear of failure and fear of not applying. And if you don't overcome that, you will not get it. You will not be able to apply and you will not get a scholarship. It's that as simple as that. I'll tell you what I would do. I would just not tell anybody and apply to as many scholarships as possible. Yes. I think there is no need to tell anybody because then only you know, right? What is at stake. Fear of failure, like obviously आपको डर लग रहा था कि आपका नहीं होगा, but at the same time आपको ये डर लग रहा था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे आसपास जो लोग हैं वो क्या कहेंगे. तो like the good way to go about it is कि work in silence, apply, और फिर उसके बाद देखें. And then apply to as many as you can. And it's part of this कि आप 10 पे अप्लाई करोगे तो शायद 2 पे 1 पे शॉर्टलिस्ट होगे. So like apply to as many scholarships as possible. Right. Are we taking another question? Also, it's 12:15. We just have 15 more minutes. Initially, हमने घंटे का सोचा था, but with questions, we're hoping that we will end the session at 12:30. And good luck to those who will be watching the recording because 90 minutes की recording होगी. अच्छा, there's this question जो आ जाता है, मुझे कभी-कभार इसकी समझ नहीं आती क्योंकि हम उस प्रोसेस से नहीं गुजरे. They are like कि बैंक स्टेटमेंट्स की जरूरत होती ही नहीं होती for scholarship. And when you are applying yourself, खुद को जब फाइनेंस करना होता है तो उसमें ऑब्वियसली आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होगी. इन स्कॉलरशिप्स नहीं, nobody asks for बैंक स्टेटमेंट्स and so yeah, no requirement for that. नहीं चाहिए आपको. Like कोई आप इनफैक्ट कहीं अगर कोई पूछे भी ना कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप बस वहाँ 0 लिख दें. नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, आप ही करेंगे सारा. That's the whole point of fully funded scholarships. Okay, are we taking another question? Let's take another question from Parsa. Assalamu alaikum Parsa, please unmute yourself and ask your question. अब मुझे चाय पीने को दिल चाह रहा है. Parsa, are you with us? I think अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं डार्ट स्कॉलरशिप्स पे देख रही हूँ और मैंने साइकोलॉजी किया है, बीएस साइकोलॉजी. तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ का आ रहा है ना, जो मास्टर्स आ रहा है वो जर्मन में आ रहा है. तो और लेकिन जो मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी वो ये था कि आपको इंग्लिश में भी आपके कोर्सेज हो जाते हैं, लेकिन मुझे साइकोलॉजी में नहीं मिल रहा. डार्ट की जो है ना, डार्ट की एक चीज है कि वो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में उनके स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं. पब्लिक पॉलिसी में या पब्लिक हेल्थ में वो भी फिर वो देखते हैं कि पब्लिक ऑफिशियल सोशल साइंसेस में भी है उनका, वो मैंने चेक किया था. बट देन दीज आर द लिमिटेशंस दैट यू हैव टू वर्क अराउंड, राइट? अगर आप डार्ट में आपको नहीं मिल रहा तो लाइक गो फॉर अनदर प्रोग्राम. आई वुड से अगर उन्होंने कहा होता कि इंग्लिश में हो सकते हैं तो आप ईमेल करके देखो. ईमेल देम, आस्क देम कि जो प्रोग्राम है ना उसमें इंग्लिश में कोर्सेज हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हर प्रोग्राम में नहीं होते. अगर उन्होंने कहा हुआ है कि साइकोलॉजी का जो प्रोग्राम अप्लाई करना चाह रही है उसमें इंग्लिश में अवेलेबल है, देन इट्स अ पॉसिबिलिटी. इफ नॉट तो फिर शायद आपको अपना लाइक या तो कोई डिफरेंट स्कॉलरशिप देखनी पड़े या अपना प्रोग्राम चेंज करना पड़े. मैंने डार्ट में अप्लाई किया था पब्लिक पॉलिसी के लिए, रिजेक्ट हुई थी मैं ऑब्वियसली. लेकिन पब्लिक पॉलिसी में उनके थे, इंग्लिश में थे उनके कोर्सेज थे, लेकिन हर प्रोग्राम में नहीं होते फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. सो इट बी वर्थ ईमेलिंग देम. उनसे पूछ लें आप. अच्छा, और क्या 18 इयर्स एजुकेशन के बेस पे हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस यू कैन कर सकते हैं. 18 इयर्स विद मास्टर्स तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. ये वाली जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये पाकिस्तान वाली है कि यूएस में यू कैन अप्लाई फॉर अ पीएचडी आफ्टर योर बैचलर्स. 16 इयर्स अगर आपका बैचलर्स हो तो उसके बाद जो है यू कैन अप्लाई. तो यू फाइन. फुलब्राइट का जीआरई कट ऑफ कुछ है?
कुछ है मिनिमम 307 नहीं 291 294 लाइक वर्बल में एक है और क्वांट में मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा. Samia has asked this question: How important is GRE score for Fulbright, and is 294 a decent score to get selected? Okay. You take this. GRE score is important. It's important because it adds a lot of it has a lot of weightage. ठीक है, it's important, but ऐसा नहीं है कि अगर आपका GRE score बहुत अच्छा नहीं है तो आपको Fulbright नहीं मिलेगी. It does come down to your entire profile, आपकी statements, आपका work experience, आपका background, आपका volunteer experience, इस सब की basis पे आपका selection होती है. और इस सब का there is like a proper system on which you are like एक पूरा system बना हुआ है जिसकी basis पे आपको रिव्यू किया जाता है आपके एप्लीकेशन. लेकिन अगर इसको ऐसे सीखें, अगर आपका GRE स्कोर अच्छा है ना, तो अगर आपकी बाकी एप्लीकेशन थोड़ी सी वीक भी है तो भी आपका होने के चांसेस हैं. लेकिन अगर आपका GRE स्कोर कम है, GRE और GPA कम है, तो आपकी बाकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत रेलेवेंट हो, आपके रेफरेंसेस बहुत ऑन पॉइंट हो, आपकी स्टेटमेंट स्पेशली बहुत अच्छी हो, देन यू वुड हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. या दैट इज व्हाट इट इज कि अगर GRE स्कोर अच्छा हो तो बहुत सारे लोग थोड़ी सी वीक स्टेटमेंट के साथ भी निकल जाते हैं. So GRE important, but it's not a deal breaker. And having said that, I think one thing that's a deal breaker usually in Fulbright and in other scholarships as well are your statements. बहुत अच्छी प्रोफाइल हो लेकिन स्टेटमेंट अगर अच्छी नहीं है ना तो मोस्ट लाइकली सिलेक्शन नहीं होती. सो इसलिए while you spend time on preparing for GRE and your references and everything else, स्टेटमेंट्स पे टाइम लगाएं, स्टेटमेंट्स पे काम करें, स्टेटमेंट्स को महीनों पहले लिखना शुरू करें so you can keep working on the draft. Because अगर स्टेटमेंट अच्छी नहीं है सिलेक्शन नहीं हो पाती अक्सर लोगों की. अगर स्टेटमेंट अच्छी है तो समटाइम्स रिव्यूअर्स साथ में नोट लिख देते हैं कि इवन दो लाइक बाकी चीजें इतनी स्ट्रांग नहीं है, but this person has a great story, is very ambitious, has a lot of potential to contribute, and on the basis of that they get selected for the interview. Yeah, so chat में question है which is like a very common theme where they're asking about what if I don't get a scholarship but I don't want to waste a year, what should I do, what steps should I take to apply for any university. I think एक जो है ना ये decisions based out of fear कि waste a year वाला ये चीज भी पाकिस्तान specific. Why would you waste a year? You wouldn't waste a year if you put that time towards something productive. अगर आप काम करें या फिर आप additional skills acquire करने, if you spend that time according to that, you wouldn't waste it. तो like इस चीज से ना डरें. Gap year का जो है ना एक बड़ा अजीब सा डर जो है लोगों के दिल में बैठा हुआ है. Doesn't matter 5 years 10 years down the line you wouldn't think about it. Yeah. So like work on yourself in that 1 year. उस एक साल में आप अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई करें, scholarships के लिए अप्लाई करें, and like based on that, the effort of that 1 year, you would be able to like put yourself ahead. So, पर अगर आपको बहुत है, आपने तैयार किया हुआ है कि आपको जाना है, तो फिर आप डायरेक्टली अप्लाई कर लें यूनिवर्सिटीज में. उसमें स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल होती है, पर कुछ ना कुछ मिल जाता है. लाइक फुली फंडेड नहीं होता लेकिन कुछ ना कुछ मिल सकती है अगर आप अप्लाई करें तो. बट या बट एज फॉर दैट साइड इस बात से ना डरें कि यार एक साल जाया नहीं होगा. आप जाए, आप कुछ और कर रहे होंगे, प्रॉब्ली आप जॉब कर रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे. सो या let's take someone from like people who have raised hand. Yeah, we just have 6-7 minutes left, so let's just take one more question and then we'll wrap it up. Yeah, Ahmed Imad. Assalamualaikum. Hope you're doing well. फरदान भाई, मेरा क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन से मैंने आपको DM आपकी आवाज ना थोड़ी क्लियर नहीं आ रही. If there's a mic है या फिर थोड़ा माइक का इशू है, काइंडली थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आप. बात है कि आपने कहा कि बॉन्ड जो होगा वो आपसे साइन करते हैं स्कॉलरशिप. नहीं समझ आ रही है अहमद, आपकी आवाज आप चैट में जो है आप अपना क्वेश्चन लिख दें. आपकी आवाज ब्रेक. हाँ, let's take someone else. Let's take Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim, are you with us? चले अरीबा शेख, आप अपने सवाल पूछ लें तब तक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. I hope you are fine.
एक्चुअली मेरा क्वेश्चन आपसे ना, मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये किया था कि हमारी डिग्री वो स्प्रिंग में हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है फॉल एडमिशन भी होते हैं और स्प्रिंग के भी होते हैं। तो मेरी स्प्रिंग की डिग्री है जिसमें मार्च में मुझे डिग्री मिलेगी। तो मैंने अप्लाई एक्चुअली करना है इटली जाने के लिए, और मैस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी, वो फंडेड नहीं होते मीडियम मैस कम्युनिकेशन के, ये रीज़न होता है। तो मैंने अपने सोचा है कि स्कूल ऑफ आर्ट्स में करूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे ये पूछना था कि अगर मार्च में मिलती है हमें ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, तो देन अप्लाई करेंगे लाइक 1 साल का गैप आ जाएगा ना, जब हम अप्लाई करेंगे इटली में। स्प्रिंग में दोबारा जब करेंगे, उसके अक्टूबर में होते हैं आई थिंक क्लासेस, तो मार्च में डिग्री लेट होने की वजह से फिर प्रोसेस होगा सारा वीज़ा वगैरह का, तो वो लेट हो जाएगा। तो हम 1 साल का गैप अगर आ जाए तो वो इश्यू नहीं होता कोई? एक ये क्वेश्चन था, और आपने बात की थी कि बैंक स्टेटमेंट है, वो नेसेसरी नहीं होती। लेकिन लाइक मेरा एक फ्रेंड गया है इटली के लिए, तो उसका ये था कि उसने कहा कि बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, उसके बाद वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं, कहते हैं कि आप लाइक स्कॉलरशिप अप्लाई कर लें। तो ये सही है या नहीं? और अगर इसके एक और मैंने आपको एचईसी की भेजी थी, सॉरी मैं इतने सारे सवाल कर रही हूँ, ये मेरी कन्फ्यूजन है तो आपसे क्लियर कर रही हूँ कि तो एक चाइना की मैंने भेजी थी आपसे, तो आप बता सकती हैं कि चाइना बेटर ऑप्शन है इटली के आगे या इटली के लिए? लाइक स्टूडेंट हैं और लाइक फंड, मैं खुद जॉब करती हूँ और थोड़ा-सा सोशल मीडिया से भी अर्न कर लेती हूँ, तो उसके पर्पज़ से आप मुझे थोड़ा गाइड कर दें। Okay, first question. Which question? There are 3 questions there. Which one do you मैं तो want to सब take? जो मुझे ज़हन में आ रहा है फ़ौरन उसका बात कर रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट वाली चीज़ है ना, कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर अप्लाइंग टू दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, उसमें स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आप खुद यूनिवर्सिटी डायरेक्टली अप्लाई करते हो, तो उसके वीज़ा प्रोसेस में आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाने होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर आपको ट्यूशन फी वेव कर देगी, फिर भी आपको लिविंग के लिए तो कुछ खर्चा चाहिए। एंड व्हेन यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, दे आस्क यू टू शो सम प्रूफ कि आप खुद को वहाँ सपोर्ट कर सकोगे। तो दैट वे यू विल नीड बैंक फंडेड स्टेटमेंट। स्कॉलरशिप के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, Yeah. क्योंकि टेक्निकली दे आर फंडिंग एवरीथिंग, तो व्हाई डू दे नीड टू सी द बैंक स्टेटमेंट अनलेस इट्स फॉर देम टू वेरीफाई समथिंग कि आपका पाकिस्तानी बेसिस है या आप कुछ, like I don't know, but I don't see like why they would need to see a bank statement, but that could also be depending on a different scholarship. होता है कोई स्कॉलरशिप कोई हो ऐसी जिसके बारे में हमें नहीं पता लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट हो, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। आपका जो पहला सवाल था, सॉरी यू वांट टू से समथिंग? जो पहला सवाल आपका था कि आपका साल जाया होगा, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑल्सो आई वुड सजेस्ट दैट यू email them and ask them if they could let you apply without a degree and a transcript, कि अगर आपके I don't know, आपके डिपार्टमेंट के या प्रोफेसर या डीन कोई भी आपको एक लेटर लिख देते हैं कि जी she will complete her program in this semester and end of semester उनको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी, तो maybe you can still apply like इसी अक्टूबर में नहीं, मे बी आप मार्च में अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड वाज कि आपको डिग्री लेट मिलेगी लेकिन एप्लीकेशन डेडलाइन मार्च में है और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आपको सिर्फ यही इशू है ना कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगी, डिग्री नहीं आएगी, तो पता करके देख लें, हो सकता है कि आपको वो एग्जाम्पशन दे दें। फुल ब्राइट दे देता है एग्जाम्पशन, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लेट आते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज फॉरन दे देती हैं, कुछ में बहुत लेट आते हैं। सो इट माइट बी वर्थ चेकिंग, बट अगर इन केस अगर आपको साल का बीच में गैप आ जाता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन था लाइक दे We are bad at this. मैस कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज, और इसमें भी स्कॉलरशिप होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होते। सो लाइक ऐसा नहीं है कि अब जिस फील्ड में अप्लाई करो उसमें कुछ भी नहीं अवेलेबल। हो सकते कम scholarships, कम उसमें कम होती हैं। She specifically wants to go to Italy. Oh, you said something about Italy and China. Yeah. That's a very personal preference. I think I would go to Italy. Just out of my personal preference. Like I don't know, like what would be a better choice in terms of your degree and in terms of your preference, कि आपको चाइना में कहाँ किस शहर में होगा, इटली में भी कहाँ पर जाना होगा, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पर अगर कोई मुझसे पूछे तो शायद मैं इटली जाऊँ, but yeah, that comes down to your personal preference. All right. I think we are at 12:28 and Yes. we should wrap this up. We hope this session was useful for you guys. Yeah, we still have like around 170 people who are still logged in, and thank you so much for sitting through the entire session. 90 minutes is long. मैं generally Zoom session में 90 minutes नहीं बैठ पाती हूँ, but thank you so much for staying with us, and we really hope this was useful for you, and we will continue to do such sessions hopefully in the future. कि हम करते रहेंगे, just कि अभी हम खुद भी थोड़ा adjustment phase में हैं. Most of you would know we've just moved to Canada like couple of months back, तो हम अभी तक भी process ही कर रहे हैं कि क्या कुछ करना है. हमारे पास कुर्सियां भी नहीं है. Technically I'm sitting very uncomfortably right now. We are hoping to continue these like बैठक sessions. Yeah.
Baignbaigum Baithak, that's what we are calling it. If you like it, Yeah. तो हमें बताइएगा. If you're watching it on YouTube, like the video, share it, subscribe to our channel, and Fadad thought this would be a perfect this time is important. to Yes, this is add about, this. and for those of you who are following us on Instagram, like it really helps us when you like share our posts in your stories and you share it with your friends, save karen, like karen. That's the way like our content can go in front of as many people as possible. Yeah. So do that. Thank you once again for Thank you joining once this again. Baignbaigum Baithak, and inshallah we'll see you in the next one. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz, everyone. Thank you so much.